Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 4. In this lecture, we are going to discuss two theorems. First theorem is if f is a piecewise continuous function on 0 or infinity interval and of exponential order c, then Laplace of f of t exists for c is greater than c. Statement दावक शे का फरज कदानुसार यो piecewise continuous function दे f यो function दे जिदा piecewise continuous दे पर 0 infinity interval की अवधाज अनुसार आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दे द्वारा कंडीशन सेटिस्फाई कई नो द फंक्शन लाप्लास में एग्जिस्ट कीगी. फॉर एग्जांपल फाइंड द लाप्लास ऑफ f of t where f of t is equal to 0 when t greater or equal to 0 and less than 3 and f of t is equal to 2 when t greater or equal to 3. तासो गोरे फंक्शन आकडे रे द 0 ना वागला तर 3 पोरे फंक्शन मुंगला 0 वेलो राखई नो ग्राफ क्यू गोरे पर x एक्सिस बांधी 0 ना 3 इंटरवल पोरे फंक्शन मुंगला 0 राखई 0 बांधी लाइन राखई द t greater than 3 the 3 ने पा आपा फंक्शन मुंगला 2 राखई नो गोरे फंक्शन कंटीन्यूअस न रे बल्कि जंप दे पके जस्ट पर दो इंटरवल के फंक्शन डिफाइन दे 0 ना 3 पोरी और 3 ना तर इन्फिनिटी पोरी नो फंक्शन इज अ होल कंटीन्यूअस न रे पर सब इंटरवल की कंटीन्यूअस दे 0 3 3 ने इन्फिनिटी पोरी पर इंटरवल के ऊपर दे इंटरवल की so f is piecewise continuous. Number 2 f is of exponential order if exponential order होंगे तासु करेंगे e power t ग्राफ था the function graph the e power t the graph ना कम दे no function of exponential order होंगे द्वारा condition satisfy कई no by previous theorem we can say that the Laplace of the function will be exist उगुरे Laplace था Laplace exists and होगा find का उस definition of the Laplace integral from 0 to infinity e minus st f of t dt the function put कई from 0 to 3 from 0 to 3 बता 0 function use कवाई e minus st 0 dt from 3 to infinity the whole interval 0 to infinity मुंगा बसा intervals के लिखो 0 to infinity for integral sorry 0 to 3 for integral या 3 to infinity for integral e minus st the 3 to infinity for बता सो यूज कवाई function 2 e minus st 2 dt t greater than 3 मतलब है जी 3 यहाँ हो तो infinity पूरी 3 पे के शामिल दलता फंक्शन का अनुसार 0 देना टोटल इंटीग्रल का 0 शी दलता 10 इंटीग्रेशन फाइंड करें 2 मार्क की रावे इंटीग्रेशन e minus st डिवाइड बाय minus s minus 2 by s अपर लिमिट और लिमिट लोअर लिमिट यूज करें लिमिट है 3 तर इंफिनिटी पोरी e minus infinity e minus 3s e minus infinity was 0 राशि minus 2 by s e minus 3s 2 e minus 3s by s where s greater than 0 तो तासु बोली दो चक्कर फंक्शन दा दो कंडीशन piecewise continuity और exponential order
ओबे कई द आ फंक्शन लाप्लास एग्जिस्ट की चाह हम फाइंड को जिदा दे नेक्स्ट थ्योरम दे next theorem shows that not every arbitrary function of S is a Laplace transform of a piecewise continuous function of exponential order. Next theorem of the show kai theorem statement rustu razi ci har yew Laplace tire da zaruri nada ci da the piecewise continuous of the exponential order the condition na agale kayo function da condition na ube kai no the aha function Laplace exist ke deshi tasu ko khabar azan koye kai kada yo function da do condition ne satisfy kai piecewise continuity of exponential order no tasu clear karda nashi mere je Laplace bane exist ki कि दो कंडीशन सेटिस्फाई कई पीसवाइज कंटीन्यूअस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नो दाबा गारंटी चे दी लाप्लास पे एग्जिस्ट की वो कयो फंक्शन दा कंडीशन द्वारा ने सेटिस्फाई कई नो तासु नशे मेरे पे गारंटी सरा चे दी फंक्शन लाप्लास पे ने एग्जिस्ट की मे भी चे एग्जिस्ट की लगाओ गए पदे स्टेटमेंट्स ऑन कोई गई नेक्स्ट थ्योरम शोज दैट नॉट एवरी आर्बिट्रेरी फंक्शन of S is a Laplace transform as a result पे किमारा जाने वाली कौन सादा कोई ना पारा कि not every arbitrary function of S is a Laplace transform as a result of a piecewise continuous function of exponential order कि दा Laplace transform चे कम मुंग फाइंड को दा जरूरी नहीं दा कि दा दी रिजल्ट ही the piecewise continuous exponential order मतलब दा जी कदम से फंक्शन piecewise continuous और exponential order होमी दा कब लाप्लास से करे दे जरूरी है जरा दे रही जका शिकले वो फंक्शन piecewise continuous नहीं exponential order नहीं नो दा दे हम लाप्लास की देशी थ्योरम स्टेटमेंट तो करे if is piecewise continuous on interval 0 infinity and of exponential order and f of s is equal to Laplace of f of t no then limit at s tends to infinity is f of s is equal to 0 theorem का स्टेटमेंट जान पड़े गए f y piecewise continuous और दारे exponential order होम एग्जिस्ट की नो ब्याज जरूरी दा चिकदा दे लाप्लास एग्जिस्ट की नो पदे लाप्लास से मंगा s टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई को दाबा मंगला खामा खाजी ना कई द थ्योरम का स्टेटमेंट जान पूरे गई थ्योरम स्टेटमेंट वाई का f जमुसर पीसवाइज कंटीन्यूअस नंबर 1 नंबर 2 f एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन भी नंबर 3 द दे लाप्लास एग्जिस्ट की द गारंटी च एग्जिस्ट की बात लुका फरस का पता का लाप्लास की कब च एग्जिस्ट है च पदे की मंगा s टेंड्स टू इन्फिनिटी s t ना s टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई को नो दा मंगला 0 ना कई का 0 इन ना को का 0 इन ना को नो दा कम द थ्योरम द स्टेटमेंट नंबर की जमा खबर आवगला ची पीसवाइज कंटीन्यूअस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नो दा देवा बे लाप्लास दे एग्जिस्ट की लगाता सुन गोरे f1s is equal to 1 f2s is equal to s divided by s plus 1 are not Laplace of piecewise continuous thus अपना Laplace is the खुदा रिजल्ट न दे the piecewise continuous of exponential order ना वली जका चिकतास f1 गोरे
F1 0 ته اپروچ نه کوي F2 0 ته اپروچ نه کوي چې کله تاسو انټنسټي انفینټي اپلای کوئ تیورم سټیټمنټ کې موږ څه وایي چې F پیس وایز کنټینیوس ایکسپوننشل آرډر نو بیا چې په لاپلاس کې موږ S ټینډز ټو انفینټي اپلای کوو نو دا موږ له 0 راکړي خو که دلته تاسو وګورئ په دې دوه اگزامپل کې تاسو S ټینډز ټو انفینټي اپلای کوئ 0 نه راکړي نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې دا لاپلاسز نه دي you cannot conclude that F1 and F2 are not Laplace transforms دا تاسو ډیسیژن نشئ کولای چې دا لاپلاسز نه دي دا لاپلاسز دي خدا د پیس وایز کنټینیوس او ایکسپوننشل آرډر نه دي دا د کنډیشن د وجې نه دي another example if f of t is equal to t power minus 1 over 2 equal to 1 over t square root is not piecewise continuous like da the theorem satisfy all the other example le are not piecewise continuous are zero infinity but its Laplace exists tasu gore t minus 1 over 2 da zam sara piecewise continuous na de to the Laplace exists de no de matlab da de che ka function zam sara Laplace exists نو ضروری نه ده چې دا فنکشن دی پیس وایز کنټینیوسي او ایکسپوننشل آرډر دی وي زما خیال دی چې خپوره ډیټا موږ په دې پیس وایز کنټینیوس ایکسپوننشل آرډر باندې ډیلی ورکړم نو پلیز دا په غور وګورئ او کنسپچوالي دا زده کړئ شکریہ